Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests, and dear friends. This place is called Mirza Ghalib Hall. So let me begin with the couplet by Mirza Ghalib, the greatest Urdu poet. वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं. Ladies and gentlemen, it is indeed a privilege to welcome you all to the Grand Indian PSU CSR Impact Awards 2025, a celebration of commitment, impact, and nation building. मुश्किलें हैं रास्ते में सफलता का इरादा है हौसले बुलंद हैं सपनों की बात करता हूं. आप लोग तालियां वालियां बजा सकते हैं. Tonight's prestigious event is being hosted by senior journalist and media entrepreneur Mr. Vivek Avasthi, the founder of White Dolphin Media and the driving force behind IndianPSU.com, the foremost web portal dedicated to public sector undertakings in India. This evening also marks the official launch of his latest initiative, IndianPSU CSR.com, a digital platform dedicated exclusively to showcasing the corporate social responsibility contributions of India's PSUs. This gathering is not just about awards, it is about recognizing the exemplary efforts of our public sector undertakings and allied bodies of the Government of India, whose unwavering dedication continues to uplift lives and communities across the country. मंजिलें क्या है रास्ता क्या है हौसला हो तो फासला क्या है. श्री नवनीत कुमार सहगल साहब, चेयरमैन प्रसार भारती. श्री दीपक मिश्रा जी, retired IPS officer, fondly known as the Super Cop of Delhi. Shri Rajiv Agarwal, former IAS officer and currently senior vice president at Samsung India, and veteran journalist Shri Alok Verma ji. We welcome you all. Please give them a big hand. I would now invite Mrs. Vandana Avasthi to join us on stage and accompany our honorable guests for the auspicious lamp lighting ceremony, signifying the beginning of this evening of inspiration and recognition. Mrs. Vandana. During this ceremony, we will commence with the highlight of the presentation of Indian PSU CSR Impact Awards 2025.
फिल्म में तेरी यूं ही रहे जश्न चिरागां, आंखों में ही ये रात गुजर जाए तो अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोगों ने दीप प्रज्वलित किया। मे आई नाउ इनवाइट मिस्टर विवेक अवस्थी, सीनियर जर्नलिस्ट and editor in chief of IndianPSU.com, to kindly welcome the guests and address the esteemed gathering. Vivek Avasthi ji. Thank you, Dharan sir. I would warmly welcome all the guests who are present over here. And Navneet ji, huh, am I audible? Yeah. So I would like to thank Sri Navneet Kumar Sehgal ji because I invited him on such a small notice that anyone else would have refused. I'll be very honest. Had I been there, I would have also refused. But knowing him from Lucknow days, when I used to be in Z News, I was the bureau chief over there. I launched Z News in UP, and then I launched Star News in UP. Navneet sir was, at that time DM UP, and then he rose and rose and rose. But the one thing which he had, which he never left, was humility. Any journalist who used to come to him when he was direct information, was not left empty-handed. Anyone, be it anyone, he used to give everyone time, regardless of the fact that he belongs to Hindustan Times or Times of India or Nashtak or an ABP News or whatever, to a very small group of journalists. He used to entertain all alike. And that was his quality with which he won the heart of journalists across UP. Because he never had any, apprehension about not speaking to someone from, a newspaper or a news channel which was not that popular. He used to entertain everyone and everyone in the same way and treat everyone in the same way. I met him after a very long time and I just gave him a compliment. Sir, age has defied you. You're still the same. Huh? Huh. Speaking a few words about Deepak Mishra ji, he has been, friend, philosopher, guide, at times enemy also when I used to be reporting crime. झगड़ा भी होता था, बहुत झगड़ा होता था, 2-4 दिन बात भी नहीं होती थी। ऐसा भी हुआ है। उसके बाद बुलाते थे, कहते, "ए छोटे इधर आ, कम हियर, व्हाई आरंट यू टॉकिंग टू मी? यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, व्हाई शुड आई टॉक टू यू?" हाँ, तो कहते, "चल अब ठीक है, सब सब सही है अब।" तो वी स्पेंट अ लॉन्ग टाइम टुगेदर, हमने दंगे देखे दिल्ली के, हमने क्या-क्या साथ में नहीं देखा। आई हैव सीन द टाइम व्हेन Deepak ji was transferred out of North East Delhi as DCP, and his staff was visibly crying, weeping in tears, absolute tears, और कंधे पे लाद के इनको अपनी गाड़ी तक लेके आते मैंने पुलिस कर्मियों को देखा है, जो कि मैंने किसी और डीसीपी के साथ या किसी और एडिशनल सीपी या सीपी के साथ कभी नहीं देखा. He had a one-to-one relationship with every cop under him. Every cop. He knew everyone by name, and that is the greatness of Mr. Deepak Mishra. Now I will come to Alok Verma ji. Alok Verma ji has been, my boss in Z, and I would like to say a very tough nut to crack, hmm, a very hard core professional, and one who doesn't believe in anything but, total and total professionalism. So one day what happened? There was some shake-up in the UP government. I was the news in charge at that time. I flashed the news. Shri Ram Prakash Gupta is the new chief minister of UP. So Alok ji was sitting somewhere else. The newsroom was somewhere else. Alok ji got angry. Who flashed this news? Who's Ram Prakash Gupta? I don't know him. So someone told him, Vivek Avasthi. Okay. उसने किया तो ठीक ही किया होगा, लेकिन बोलना मुझसे एक बार बात कर लेगा. So these are some anecdotes, of these great people who are sitting over here. On the other side, I would like to
which is being done by PSUs and NGOs for the betterment of the society is not being reported. I think there was a very big gap in what you guys are doing and what is being reported. So there are thousands of examples, and one starts speaking of it, it will never end. Unending story. First nation, what is being done by your great PSUs and the great NGOs goes unheralded, unreported, be it print, be it television. So I found there was some space, rather a huge vacuum, I would say, to start this. Last function we did was 18th of March, same place, another hall, of course. Indian PSU Achievers Award we did. And then we decided that we will do this award to honor what is being done and which is going simply unreported. That is that was my main concern. Over here, I would like to thank two people. One is MD and CEO of Delhi Tourism, Mrs. Niyata, and one is CCL CMD, who have been our associate partners. Plus a special word of thanks to Mr. Arvinder Singh Sani, the CMD of Indian Oil Corporation Limited, who's been so very supportive to IndianPSU.com that I call him any day if he can't answer someone else calls. Yes, बताइए CMD साहब ने बोला. I tell him, sir, we want to do presentation. Okay, we get it. Any award, any show, anything. Chairman, NTPC, Sri Good. Same. Vivek, what do you want? Tell me. Do it. Go ahead. So this is, what we've earned in the past 5 years. That is, trust from CMDs of these huge PSUs, Marathons. And this is the one thing which makes us, a bit proud that working with a small team for the past 5 years has brought us to this stage. I think now I'm boring people and my wife is sleeping actually. So I will, I'll take your leave. Enough. Thank you. थैंक यू विवेक अवस्थी जी. आपने ये भी बताया कि डरना चाहिए. वो एक रहस्य, वो एक राज जो था, आपने यहाँ मंच से जाहिर कर दिया. बहुत अच्छी बात है. मैं गुजारिश करूंगा श्री नवनीत सहगल जी से कि वे मंच पे तशरीफ लाए और दो शब्द कहें. ठीक है. आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मिश्रा जी, वर्मा जी और विवेक अवस्थी हमारे साथी जो PSU से आए हुए हैं. विवेक अवस्थी जी ने मुझसे कहा कि PSU CSR अवार्ड्स का एक प्रोग्राम है, आपको उसमें आना है. तो एज ए गुड बिग सपोर्टर ऑफ CSR एक्टिविटीज, मैंने कहा कि PSUs को की तारीफ भी करने के लिए कभी कभी जाना चाहिए हम सब लोगों को. और विशेषकर पिछले 10 सालों में हमारे बहुत सारे PSUs ने टर्न अराउंड किया है और प्रॉफिट्स भी काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं. तो ऐसे में चाहे वो PSU अचीवर्स अवार्ड हो या PSUs जो CSR पे खर्च कर रहे हैं वो अवार्ड हो, उसको जाना चाहिए. बिकॉज यू शुड अप्रिशिएट व्हाट आर PSUs they've been doing, and for many years they've been treated as loss-making organizations where nothing comes out once it goes. और सरकार का इतना बजट वो खा जाते हैं, आगे आता नहीं है. तो बड़ा अच्छा लगा मुझे जब इन्होंने मुझे कुछ फिगर्स भी दिए कि जैसे इस साल
लगभग हमारे PSUs ने 4,911 करोड़ रुपए खर्च किए हैं CSR एक्टिविटी, विच क्वाइट ए ह्यूज सम। एक बहुत बड़ी धनराशि है देश में इस प्रकार के एफर्ट्स के लिए, क्योंकि मोस्टली इसमें से पब्लिक एसेट्स होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कम्युनिटी के यूज में आ रहे होंगे, स्कूल कॉलेजेस में होगा, आपके कॉमन सिटीजन के यूज के लिए होगा, तो नेशनल बिल्डिंग में ये सब काम आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत एफर्ट है और इट इज अप्रिशिएबल, उसको अप्रिशिएट हम सबको करना चाहिए। बहुत सारे जो PSUs हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे ONGC, इंडियन ऑयल पावर ग्रिड है, REC है, पावर फाइनेंस PFC है, NTPC भी है। ये हमारे PSUs जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और लगभग इन्हीं का ही 60% से ज्यादा स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटी। एक चीज जो बहुत जरूरी है, everybody should appreciate is the turnaround of the PSUs, particularly in defense sector. You must have seen the recent some sort of a war with Pakistan, and our indigenous equipment, they ranked and they performed very well, exceedingly well. In fact, that has prompted the demand from all over the globe for our defense products, and many of our defense PSUs are doing exceedingly great work. So, all my appreciations. जैसे मैं बात कर रहा था कि प्रॉफिट मेकिंग PSUs जो हमारी हैं, मुझे इन्होंने यही बताया कि जैसे ONGC, इंडियन ऑयल, BPCL और NTPC, कोल इंडिया, ये सारे इतने अच्छे मुनाफे कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी हुई है कि जो लॉस मेकिंग PSUs हैं उनके लॉसेस भी घटे हैं फ्रॉम 29,000 करोड़ टू 21,000 करोड़। सो it's a culture, it's a leadership which is giving them incentive, which is giving them a kind of comfort level. PSUs में हमेशा ये रहता है कि डिसीजन मेकिंग इज वेरी स्लो, एंड दैट इज स्लो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हैसल्स, ऑडिट्स, ये वो सब। उसकी वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जैसे लोग बात करते हैं, उस वजह से PSUs में बहुत सारे डेफिशिएंसीज हैं, इनएफिशिएंसीज हैं, उस वजह से लॉसेस होती हैं। बट पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक सभी देश के ऑर्गेनाइजेशंस में एक कंफर्ट लेवल मिला है, वो PSUs में भी एक कंफर्टेबल मिला है। डिसीजन मेकिंग की स्पीड उनकी अच्छी हुई है क्योंकि उनसे डिलीवरी की उम्मीद है। तो इसी को अप्रिशिएट हम लोगों को करना चाहिए। और अगर वो लॉस मेकिंग भी हैं तो दे आर ए ड्रेन ऑन आवर नेशनल एक्सचेकर, नेशनल बजट, एंड इट इज़ वेरी गुड दैट दे आर इम्प्रूविंग, एंड आई वुड अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। मोस्टली ये जो PSUs हैं हमारे डिसास्टर रिलीफ में काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी में काम कर रहे हैं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, आर्ट और कल्चर को कर रहे हैं, और सबसे बड़ा कि हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो ये highly appreciable, and we as a citizen of this country, we should appreciate their efforts, and that is why I also came here. I'm very happy to be here, and I thank Vivek Awasthi to he's allowed me to participate in Delhi's program. I'm new to Delhi. मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूँ 35 साल। दिल्ली में मैं नया हूँ, तो मुझे आपने दिल्ली की जो एक सिस्टम है उसमें घुसाने का आपने मुझे प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत नवनीत सहगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स मूव ऑन एंड we have a video message from Dr. Bhaskar Chatterjee. Dr. Bhaskar Chatterjee, retired IAS officer and widely regarded as the father of Indian CSR, was scheduled to join us, but due to health reasons, he couldn't come. But he has sent a video message for all of us. So let us now hear that. Yeah, just play it. Dr. Bhaskar Chatterjee.
Good evening, distinguished guests, esteemed dignitaries, respected CMDs and directors of India's leading public sector undertaking, partners in progress from the development sector, and all the proud awardees present here today. It would have been both a privilege and an honor to stand before you on this momentous occasion, but health compulsions did not allow me to attend the show in person. The Indian PSU CSR Impact Awards 2025 is a platform that celebrates and honors the commitment of India's PSUs to sustainable and inclusive development. India's journey of nation building would be incomplete without acknowledging the pivotal role played by our public sector undertakings. From energizing the power grids of remote villages to laying the steel and concrete of our modern infrastructure, from building refineries to running railways, and from nurturing natural resources to enabling financial inclusion, PSUs have been and will continue to be the pillars of India's economic resilience. But today, we celebrate a dimension of their contribution that goes beyond balance sheets and profit margins, their work for the community. Through their corporate social responsibility initiatives, PSUs have emerged as change makers at the grassroots level. Whether it's providing quality healthcare in underserved areas, empowering girls through education, building skills among youth, promoting sustainability and green energy, or revitalizing tribal economies. PSUs have touched lives across every sector and every corner of our wonderful nation. These initiatives are not just about compliance, they are mostly about compassion. They are not just about expenditure, they are about empowerment. The projects being honored today are shining examples of what happens when institutional strength meets social conscience. It is a reflection of the human face of India's industrial giants, a face that listens, learns, and leads. I would also like to take a moment to acknowledge the efforts of Shri Vivek Avasthi, a veteran journalist with over 3 decades of experience, who has championed the cause of PSUs and their social impact through www.indianpsu.com and the newly launched www.indianpsucsr.com. His commitment to highlighting untold stories from the public sector, the development ecosystem, is indeed commendable. And initiatives like today's award ceremony are a testament to his vision and dedication. As we move forward into a future driven by sustainability, equity, and innovation, I firmly believe that the CSR work of our PSUs will continue to play a transformative role in India's progress. Let us remember, growth is meaningful only when it is inclusive, and development is complete only when no one is left behind. To all the award winners this evening, your work is not only inspiring but also instrumental in shaping a more just and compassionate India. Congratulations, and may you continue to set benchmarks for excellence in service to our society. Thank you, and Jai Hind. Good evening. So, with that, let us begin with the first award of the evening. Um, and the first award is Lifetime Achievement Award to Dr. Bhaskar Chatterjee himself. And to present this award, may I please request Professor Rohan Sarma, his longtime associate, to receive the award. Professor Rohan Sarma.
हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा. जोरदार तालियां, ladies and gentlemen. The next award is, in fact, we start with a category called Corporate Social Responsibility Awards, CSR. Second award is Healthcare Initiative of the Year, and the award goes to Coal India Limited. Congratulations, Coal India Limited. Healthcare Initiative of the Year. Corporate Social Responsibility Awards, PSU category. Healthcare Initiative of the Year goes to Coal India Limited. Next is Best Rural Healthcare Initiative of the Year, and the award goes to Solar Energy Corporation of India Limited. Best Rural Healthcare Initiative of the Year, Solar Energy Corporation of India Limited. Congratulations. Next is Best Women Healthcare Initiative of the Year, HLL Life Care Limited. Award goes to HLL Life Care Limited. Next is Best Rural Child Healthcare Initiative of the Year, and the award goes to Indian Oil Corporation Limited. Indian Oil Corporation Limited. Best Rural Child Healthcare Initiative of the Year. Congratulations to Indian Oil Corporation Limited. Give them a big hand. Before we move on, may I request Shri Deepak Mishra ji to say a few words, please. Deepak Mishra ji. मुझे दो शब्द कहने के लिए कहा गया है। मेरे दो शब्द हैं, जय हिंद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये दो शब्द आपके ऐसे हैं कि जिसमें सैकड़ों शब्द शामिल हैं और हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं शामिल हैं। इससे अच्छे दो शब्द कुछ नहीं हो सकते थे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स मूव ऑन। बेस्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, एंड द अवार्ड गोज टू पेट्रोनेट LNG Limited. Congratulations, Petronet LNG Limited. Best Skill Development Program Initiative of the Year. Next is Most Tree Plantation Initiative of the Year.
This is a very important award, and this one goes to United India Insurance Company Limited. Give them a big hand. Most Tree Plantation Initiative of the Year. हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले हैं. Most Tree Plantation Initiative of the Year, United India Insurance Company Limited. Congratulations. Next is Best Wildlife Protection Initiative of the Year. And the award goes to Indian Oil Corporation Limited. Once again, congratulations. Hazreen, ladies and gentlemen, तालियां बजती रहनी चाहिए. Best Use of Solar Energy Initiative of the Year. Best Use of Solar Energy Initiative of the Year. And the award goes to Indraprastha Gas Limited. Congratulations. जोरदार तालियां इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड के लिए. बहुत बहुत मुबारक हो. Congratulations. Best Use of Solar Energy Initiative of the Year. अगला अवार्ड है पूरी आधी आबादी के लिए बेस्ट विमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर. और इस पर तो बहुत जोर से तालियां बजनी चाहिए. द अवार्ड गोज टू शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेस्ट विमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो लोग यहां मौजूद हैं, आकर के अपना पुरस्कार ग्रहण करें. बहुत बहुत शुक्रिया. जोरदार तालियां शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए. और अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले गुजारिश करूंगा वेटरन जर्नलिस्ट श्री आलोक वर्मा जी से कि वे आए और दो शब्द कहें. हो सके तो दो शब्द से कुछ ज्यादा कहें. आप सभी को मेरा नमस्कार. जिन लोगों को आज अवार्ड मिल रहे हैं या मिल चुके हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. अब बहुत सारी बातें पीएसयूज के बारे में नवनीत जी ने अपने भाषण में कही, और जो भी कहा वो सब कुछ सत्य ही है, तो उसमें मैं क्या ज़्यादा बात करूं. लेकिन जिन अवार्ड्स को जिसने आज देने की ये प्रक्रिया शुरू करी है, उनका नाम जो विवेक अवस्थी है, मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे उनके बारे में कुछ बात करनी चाहिए. अब विवेक ने ये जब 5 साल पहले indianpsu.com शुरू करने का फैसला लिया, तो इन्होंने मुझसे, जैसा विवेक का एक नेचर है कि थोड़ा काम जल्दीबाजी में करने की उनकी आदत है. काम करने में बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन काम थोड़ा जल्दी करते हैं. तो जब काम जल्दी करते हैं तो एक ऐसा भी आता है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी जल्दी होता है. तो जब ये काम शुरू कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि देखो, ये पीएसयू का काम है. पीएसयू की रफ्तार जिस प्रकार की है, उसी प्रकार की रफ्तार से काम करना पड़ेगा. क्योंकि बहुत एग्रेसिव जो न्यूज़ इंडस्ट्री के आदमी हो, तुम्हारा हर न्यूज़ 24/7 करने की आदत रही है, वो तुम्हारे PSU.com में 24/7 नहीं चलेगा. So you have to find a way in which you find your own rhythm so that you are not get frustrated. There were moments when he would call me and say, "Sir, nothing is happening." I would say, it's a long haul. You can't really get results in a short haul. Just keep doing, and you will get results, because this is an area which is long ignored by mainstream media. You hardly get to see anything in the mainstream media because the focus is always something else.
The only platform where the PSUs really would get recognition is only Doordarshan or the All India Radio. But I'm very glad to see what has turned around. After 5 years, Vivek has established himself in a field which no other journalist actually dare to, because this is something which everybody wants a fast recognition. And the work which they had been doing all these 35 years, they want to replicate that work only. But he found a new place, new path. And I'm really very happy to see him growing. The way this IndianPSU.com is growing, he has instituted 2, 3 awards. The last award I could not come because of my travel. This time he really warned me that if you don't come this time, then probably like he fought with Deepak Mishra ji, he would have fought with me too. So I'm sure that Vivek will do very well in few coming years. He has been doing great work. IndianPSU.com should continue to do great work. And PSUs definitely need this kind of not only recognition, but some place where they can place their own developments, initiatives, uh, to a dedicated platform like IndianPSU.com. I'll just give one example how my perspective and how my outlook got changed uh, with regard to a PSU functioning. I work with a very large spiritual organization by the name of Chinmaya Mission. I'm a trustee and I'm also the chairman of the schools. And one of our schools uh, is is in the township of NTPC in Uttar Pradesh, called place called Unchahar near Raebareli. 6, 7 years ago, when I visited that school for a board meeting, I virtually was very surprised to see how an organization like NTPC, which is running a coal-based thermal power plant, you could, while you were in the campus, you would see coming a lot of ash. And by the time you spend the day, you will find some ash components here and there. But in the last 6, 7 years, when I go to that township again, the kind of work they have done, the kind of solar initiatives they have done, and the kind of programs which through the CSR initiatives they have done in and around the radius of that township, which seeing is believing. They have revived the water bodies, the kind of tree plantations of they've done, the way the women empowerment has done, the way they have worked on the sustainability. This is one very limited example of NTPC in that small township. I'm 100% sure NTPC's overall country, footprint must have been much, much bigger. So a lot of things when you don't see yourself, you have some very different perspective about it. So I'm very glad that Vivek has really today honored those who take the CSR initiatives. And I'm sure the next year's award will be much bigger. This is the beginning. So thank you all and congratulations to everyone. बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। इतनी तारीफ हो रही है तो मैं सोच रहा हूं कि विवेक जी के लिए एक शेर मैं भी पढ़ दूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, आप वाह वाह करेंगे और तालियां भी बजाएंगे। तो शेर कुछ यूं है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अब इतनी जोर से भी नहीं करना था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप गलत तरीके से वाह वाह करते हैं तो वो वाह दिल पे आह बन के लगती है। तो let's move on, ladies and gentlemen, and next award is Best Mental Health Initiative of the Year. Best Mental Health Initiative of the Year, and the award goes to Petronet LNG Limited. Congratulations, Petronet LNG Limited. जोरदार तालियां पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के लिए। और स्पीच आप लोगों को याद दिला दें कि अवार्ड फंक्शन के बाद डिनर और ड्रिंक्स के लिए जरा रुकिएगा।
और जल्दीबाजी में ऐसा ना समझिएगा कि विवेक जी ने कुछ इंतजाम नहीं किया है। यहाँ काफी अच्छा खासा इंतजाम है, डिनर भी है, खास तरह का पानी भी है, रंगीन और सादा दोनों। तो उसे लेके जाइएगा, ग्रहण करके जाइएगा। अगला अवार्ड है एम्पावरिंग द गर्ल चाइल्ड इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, and the award goes to NTPC Limited. NTPC, empowering the girl child initiative of the year. NTPC Limited. अगला अवार्ड है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड पब्लिक हेल्थ केयर इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, एंड द अवार्ड गोज टू भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जोरदार तालियां। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड पब्लिक हेल्थ केयर इनिशिएटिव ऑफ द ईयर। अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव यहां हैं, कृपया मंच पर आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। Next award is Best Child Healthcare Initiative of the Year. Best Child Healthcare Initiative of the Year. And the award goes to Lodhi and Company Limited. Best Child Healthcare Initiative of the Year. Many congratulations. Lodhi and Company Limited. Next is Best Women Empowerment Initiative of the Year. Best Women Empowerment Initiative of the Year, and the award goes to Indian Oil Corporation Limited. Indian Oil Corporation Limited. Next award is Best CSR in Aspirational District. Best CSR in Aspirational District, and the award goes to RVNL, Rail Vikas Nigam Limited. Rail Vikas Nigam Limited. Congratulations, sir. Congratulations, sir. Next is Best CSR Initiative, Lifeline Express, Hospital on Train, Bharat Petroleum Corporation Limited, BPCL, Lifeline Express, Hospital on Train, Best CSR Initiative, Bharat Petroleum Corporation Limited. Congratulations. The award is known as Best CSR Initiative, Lifeline Express, Hospital on Train. Congratulations, BPCL. Next is Best Integrated CSR Initiative of the Year, and the award goes to HPCL, Hindustan Petroleum Corporation Limited, HPCL. Indian PSU Award for Best Integrated CSR Initiative of the Year, Hindustan Petroleum Corporation Limited. Next is
Best Senior Citizen Healthcare Initiative of the Year. Best Senior Citizen Healthcare Initiative of the Year. And the award goes to Petronet LNG Limited. Petronet LNG Limited. Next is Best CSR Initiative to give first flight experience to school children. फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस टू स्कूल चिल्ड्रन। और मुझे यहाँ पे एविएशन के कुछ लोग नजर आ रहे हैं, क्या आप ही को अवार्ड मिलने वाला है? लीजिए, आपको पहले से ही मालूम है। अलायंस एयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, अलायंस एयर बेस्ट सीएसआर इनिशिएटिव टू गिव फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस टू स्कूल चिल्ड्रन। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है। मैं आप लोगों में से किसी से चाहूंगा कि अगर आप बता सकें इस इनिशिएटिव के बारे में 2 शब्द, अगर हो सके तो 2 शब्द से कुछ ज्यादा। Thank you, everyone. Thanks for calling us here and giving this opportunity to be awarded here. We are from Alliance here. We are a domestic carrier flying tier 2 and tier 3 cities only in India, supported by MOCA, which was civil aviation. In fact, we had the opportunity to fly our first flight from Delhi to Hisar by the support of government of Haryana. And we had a school from Rajon, that's in Haryana, a small town where the school of almost 40 people came all the way from their hometown school to Delhi. They took almost 6 hours early morning, 1 o'clock. They came to Delhi, and with our management, they gave a very special fare, and they took us on board, taking all the children, especially on this flight, giving giveaways. Also, they were so happy. The first flight they experienced with us, like they have school children from 7 to 12. We were so happy. The children came so well. They appreciated. They came up to our office. They thanks Alliance for giving them to fly all the way first time in their lifetime achievement. They were so happy to fly with us. Thank you. I would like to invite someone from Indian Oil Corporation Limited. Indian Oil Corporation Limited to say a few words. You've got CSR Project of the Year, Best CSR Project of the Year award. Please say a few words. So thank you for the honors. So we have in Karnataka, we have taken up one project which is titled as Project Chandana, wherein we have joined hands with Government of Karnataka and IISc Bangalore. And the intervention is sickle cell anemia elimination in 3 tribal districts of Karnataka in Mysuru, Kodagu and Chamarajanagar. So the target was to screen and test these tribal population. So we were jointly working with National Health Mission, and our target was to reach out to 2.56 lakh tribals within a span of 2 years. And by the end of the first year, we could successfully test more than 2 lakh patients. And this is one initiative where we could reach to remote parts of the state, and we could extend the healthcare access, which was otherwise very difficult for these tribals to achieve. So this is a short initiative which we have done about on healthcare. And also we have done one more initiative titled Badte Kadam, wherein uh, we have collaborated with Cure India Trust, which is an NGO. And in this project, we reached out to 500 children from Delhi NCR from the underprivileged and marginalized background. And we have treated these children who are suffering with clubfoot disability, which is a rare genetic disorder wherein the child may not lead a normal life. So we could successfully treat these children and ensure that they lead a normal life. Thank you. Thank you so much, sir. I would like to invite the representative of United India Insurance Company Limited, who have got the award of Most Tree Plantation Initiative of the Year award. Please
say a few words about your initiative. Thanks. सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस पीएसयूज़ को एक्नॉलेज करने के लिए। हम एक तो पीएसयू हैं, ऊपर से इंश्योरेंस कंपनी है, तो हमें तो बुराई या गालियाँ सुनने की आदत है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई किसी चीज़ के लिए प्रशंसा करे। तो फॉर्चुनेटली लाइक दिस इज़ द थर्ड अवार्ड इन द लास्ट 1 मंथ हमको एमएसएमई सपोर्ट अवार्ड मिला और फोर्ब्स ने भी हमें एज़ वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज़ फॉर मोटर पहचाना है और अब ये तीसरा। सो इट्स बीन अ वेरी गुड मंथ फॉर अस और रहा इस इनिशिएटिव का तो a lot of credit goes to my colleague पुष्पलता who is our DGM here और शायद क्योंकि वो पुष्पलता हैं इसलिए वृक्षों से उनका खास लगाव होगा। तो पूरे साल भर किसी न किसी योजना के अंतर्गत हम अपने यहाँ ऑफिसर्स को ये मोटिवेट करते हैं कि और क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली हम ये कहेंगे कि हमारे पास सीएसआर फंड्स नहीं है, हम पिछले साल तक लॉसेस कर रहे थे, इस साल ही हम लोगों ने टर्न अराउंड किया है, लेकिन और तो कोई तरीका नहीं है सीएसआर के ये एक्टिविटी करने के लिए। तो हमारा ये पेड़ों के तरह से और पेड़ लगाने के ज़रिए हम समाज के प्रति ये कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि एक पेड़ 10 पुत्र समान। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आपको मुबारक हो अवार्ड के लिए। कुछ और अवार्ड्स दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट इशू है मेंटल हेल्थ का और बेस्ट मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड को। मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से गुजारिश करूंगा कि इस इनिशिएटिव के बारे में आएं और कुछ बताएं। So, respected dignitaries, thank you very much for recognizing our CSR initiatives. So, this mental health initiative, what we have taken is in Kota district, where children go for their IIT studies. So, we found that as per so many newspapers, they are under a lot of pressures. So, we collaborated with the Mental Health Foundation of India. So, they are organizing camps. So, they are taking care of students, they are talking to them, and we feel it is a very good initiative. So we are replicating it at other places. So, and thank you everyone for recognizing us. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। And now let's move on with the couple of more awards. As Navneet sir has to leave, so let's yeah, we would like to invite on the stage Shri Rajiv Agarwal ji, former IAS officer and currently senior vice president at Samsung India. Please come on the stage, sir, and say a few words. Please address the gathering. Thanks. मिस्टर नवनीत सहगल जी, दीपक मिश्रा जी, विवेक, आलोक जी, ये तो वो एक कहावत है, सिर मुंडवाते ही पड़ गए बिल्कुल। No, but first of all, my apologies for coming in late. But जैसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए. So I hope I can play that role. And obviously, first of all, heartiest congratulations to all the winners.
CSR की जिम्मेदारी निभाना आसान काम नहीं है किसी भी संगठन के लिए, और खासकर उससे जो जुड़ी हुई टीम होती है। और ऐसे में जिन लोगों ने पूरी आस्था के साथ, निष्ठा के साथ लगकर CSR का कार्य अपने संगठन के अधीन किया है, मैं जानता हूँ कितना मुश्किल काम है, और उस काम को बखूबी निभाना, और फिर उसके बाद इतने हजारों ऑर्गेनाइजेशंस, हजारों कंपनीज के बीच में से इवन फॉर PSUs उसमें से उभर कर सामने आना, ताकि उनको विशिष्ट पहचान मिल सके, पुरस्कृत किया जा सके, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। और मैं आप सबको उस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा। मैं यही आशा करूँगा कि जिस प्रकार से आप जिस लगन के साथ, जिस निष्ठा के साथ आप अपना कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से आगे भी करते रहेंगे। और अवस्थी जी से तो मेरा यही आग्रह है कि वो इसी प्रकार से सम्मानित और पुरस्कृत सबको करते रहेंगे, ताकि और उत्साह और एक एंथुजियाज्म सब में आएगा, जिससे कि वो हमारे समाज की सेवा निरंतर आगे भी करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब. Let's move on with the awards. And next award is another Lifetime Achievement Award. And this goes to Mr. Rajiv Goyal, former Executive Director, HPCL. Rajiv Goyal साहब, बहुत बहुत मुबारक हो. Many congratulations. Lifetime Achievement Award, Shri Rajiv Goyal ji, former Executive Director, HPCL. बहुत बहुत मुबारक हो. May I request Mr. Goyal to come on the dais and say a few words. Good evening, everyone. I'm very thankful to Mr. Vivek Avasthi for honoring me with this prestigious award. I just superannuated from HPCL as ED, Executive Director, CSR, Public Relations and Corporate Communications. So I did dedicate this award to all my colleagues back home in Mumbai, who have been part of this team. And on behalf of HPCL and all my colleagues, I'm receiving this award. In HPCL, which we are a Maharatna company, and we are doing number of initiatives. And this, what Mr. Vivek Avasthi has launched this initiative, wherein he is going to talk about the CSR initiatives of the public sector undertakings, because lot of initiatives and things are being done by public sector undertakings, but what happens that it is not coming to the light. It is not being recognized in the sense, from the main media, the coverage, the type of work we are doing is not getting publicized and brought to the people. Like we just now got a tree plantation award was given to United Insurance. So I just also would like to say, last year we had our 50th foundation day. On this particular occasion, to celebrate, one of our objectives was to plant 5 lakh trees during the course of 1 year, which we did last year. So these are the type of initiatives all the PSUs are doing, but unfortunately, it's not going to the public at large. Number of initiatives. We are doing one initiative called Bill Without Bill, wherein we support the children who cannot be operated because it's a very costly affair. So these are number of initiatives, whether it's IOCL, BPCL, HPCL, GAIL, ONGC, OIL, and EIL, which are the working under the aegis of Ministry of Petroleum. We are doing number of initiatives, and which Mr. Vivek Avasthi is trying to bring into the public. Thank you so much, and I'm thankful to everybody for giving me this Lifetime Achievement Award. Thanks a lot. Thank you, Goyal साहब.
I would like to invite on the dais um, representatives of Bharat Petroleum Corporation Limited, please. And please come here and say a few words about your initiative, CSR initiative, particularly Lifeline Express, hospital on train. What is it? Good evening, everyone. Good evening, sir. One of our project, which is the flagship of BPCL, it's a Lifeline Express hospital on a train. It's a 7 coaches where has the operational theater on that, and with the aim of avoidable disability in a rural area. Out of the 12 locations that we have done, 9 location is in a aspirational districts, which we also then highlight in many of our platform. So there are some clave that clave surgery is there, now ortho surgery is there, even cataract surgery is there. So we are in partnership with Impact India Foundation, who is an NGO that we partner. Indian Railway is there, and even district magistrate in all their activity that we do, we partner with them. So in short, it is we do little bit of um, activity which helps in avoiding disability in the rural most very remote area, which the train goes to the the most remote place where is the last station of a country. So in that location that we have done. Thank you. Thank you, ma'am. Let's move on with a couple of more awards. And the next award is CSR Trailblazer of the Year. CSR Trailblazer of the Year. I would like Shri Deepak Mishra ji to give away this award, and the award goes to Professor Rohan Sarma. Professor Rohan Sarma, CSR Trailblazer of the Year. Professor Rohan Sarma. Professor Rohan Sarma, as we know, you've been close associate of Dr. Bhaskar Chatterjee, who we have awarded today, Lifetime Achievement Award. I would like you to say a few words about your association with Dr. Bhaskar Chatterjee and your contribution as well. Thank you. Namaskar, Jai Hind. It all actually feels that one is part of family because 90% of the faces in the audience are known to me. We have worked in some capacity. Firstly, uh, dignitaries on stage, each of you have been such inspirations to us. And I want to say that today's award is not about us individuals. I think it is about recognizing the power that India stands for. I'm going to make my address very brief, and thank you so much, Vivek ji. But I'm going to keep it very simple, and I think, given that I have been very fortunate to have been born at a particular time when CSR was being conceptualized in this country, it gives me immense pride today, ladies and gentlemen, just like it must give each one of you pride, that India is the first country in the world to have had a legislation on CSR. No other country has dared to actually have a legislation on CSR. And therefore, we are the only country in the world to have the Bharatiya model of CSR. And that's where, Dr. Bhaskar Chatterjee is not here, but I think he and his team at the Department of Public Enterprises, I want to salute them. And I think the country has done a major, major disservice. I keep saying this. My friend, Dr. Sanjeev Sanyal, who you might be knowing,
we have only one goal right now, and I want to say this publicly. Nowadays, I just have one irritation always, especially when I go to such conferences and conclaves. I respect every nation and their development trajectory. But I find it extremely irritating, extremely talking down upon when I hear lectures from the West telling us what should be our sustainability and CSR journey. And I think it's time today, when India has arrived, and as the Vishwa Guru, I think it's our time to speak. And when we speak of CSR, when we speak of responsible business, today the world has not heard the real champions of India's growth. Private sector has done phenomenally well. But I think our public sector undertakings, who have been the silent beacons of India's inclusive growth story, not just growth, we have done as a country a huge disservice. And that is where individuals like Vivek ji deserve our full support. Full support. Every other day, I am invited in some jury or some PSU awards. In fact, many of you have got awards from me. Heartiest congratulations to all of you. What is so different? And I want to say this, with full honesty. Vivek ji, and sir, you as well, you represent a very, very important part of civil society, which is the media and the press. I strongly believe, and I wear the flag on my sleeve pretty much, the reason that I'm proud to be an Indian is because of India's public sector enterprises. So please, everybody in the house, if you're from the public sector enterprises, please deserve a round of applause. Vivek ji and all the others associated with this event, being part of the press and being part of the media, are actually filling a very critical gap in the CSR ecosystem today. And that is C for credibility. I think today when the media asks questions, the media asks questions that are well researched. And what I am firstly, I'm so amazed. This is the first award program where I see that a CSR program on mental health is being spoken about. My work in the last 1 decade has been, of course, I was very lucky to be part of the Government of India Committee back in 2011. My colleagues from DP are not here, but I want to recognize their contribution. But when you recognize an underrepresented area like mental health, when you actually say that we are aligning with Honorable PM's latest initiative, Ek Ped Maa Ke Naam, and when you are actually planting trees, this is only possible by public sector. Let me tell you this. And therefore, back then I remember when this bill was being tabled in Parliament, some of us vehemently said PSUs do not need to do CSR. A PSU has the name public. A PSU nature of business is CSR. But despite that, each of you, and I have myself visited places like Chhattisgarh, there was an award for aspirational districts. I led a study for the Government of India in 2012 on scope of CSR in aspirational districts. I can tell you, ladies and gentlemen, this award does not do justice to some of the challenging locations where companies like Coal India Limited, I think they are here, companies like NTPC, GAIL, HPCL, BPCL, name it. The kind of work that is happening on the field, and I agree with one of the speakers before me, it's not reaching the people. And therefore, I have a problem when the West lecture us using their indices. I have a serious problem, and so should you. India should have its own standards. We decide, we today take the call. We are the Vishwa Guru. It is India's time.
It is your time, it is my time, it is a time for PSUs. We talk about, and so far, I know that PSUs have not spoken. That's the style of PSUs. You work in a very subdued, and that is why today my entire work has been, and I've been a vocal advocate of it. Please do not lecture us. We know how to do development. Our honorable PM has set a vision for a Viksit Bharat. And therefore, today when I was sitting, I actually wrote of an equation. And for me, today's equation is VA plus VB is equal to VG. Do any of you want to, because so far it has just been a one-way conversation. Any of you would like to take an attempt? What is VA, what is VB, what is VG? Because CSR में जो काम कर रहा है, we often think, oh, it's a punishment posting. But let me tell you, ladies and gentlemen, if you are handling CSR in your department, you are the brightest sparks in your company. Because CSR cannot happen without empathy. It cannot happen without creativity. It cannot happen without having a larger vision. And therefore, Vivek ji is actually continuing the work of someone whose name he shares. And let me tell you this, ladies and gentlemen, I do not care about the West lecturing us about their models of CSR. For me, CSR's father, of course, Dr. Chatterjee is widely acclaimed, but for me, the real father, the real guru of CSR in our country are two people. One of whose name Vivek ji actually has. Any guesses? Swami Vivekananda. It was Swami Vivekananda ji when he was on a ship with the very famous J.R.D. Tata that you had institutions of excellence like the Indian Institute of Science that was born. If you look at carefully the teachings of Swami Vivekananda ji, you will see that all the principles of CSR, sustainability, blah, blah, we talk about, it is enshrined in our Indian civilizational history. And like my friend Sanjeev Sanyal says, you all know him, right? Please support Sanjeev. You know who Sanjeev Sanyal is? Member of Prime Minister's Economic Advisory Council. Great historian, great economist. Now, as we talk about building an economy, we're also talking about reclaiming India's civilizational glory. And that is why, ladies and gentlemen, just like you are focusing on mental health going forward, can we also start having CSR for art and culture? I work in the area of sustainability. I chair the social standards for the Bureau of Indian Standards. And today we are embarking upon India being the first country to have its own sustainability reporting standards. India will be the first country in the world to have its own sustainability reporting standards where CSR is going to be integrated with ESG. Therefore, I think Vivek ji and okay, VA plus VB is equal to VG. Any guesses? Else I'll tell you what the equation is. Haji? VA is who? Arey, of course. Vivek Avasthi. So he's the catalyst that has brought all of us together. And we need to continue to support initiatives like this. What is VB? Haji? Arey, wow. Excellent. See, that's why PSUs, exactly. Viksit Bharat. Let's be very clear. You building one compound wall or you giving funds to your district collector is not going to do either you or the communities or the country any good. Please understand. You have been asked by the government of India to show the way, just like you have shown the way post-independence. It is the PSUs. All of you will know about the Mahalanobis model when Planning Commission was there. It is the PSUs that have built India. And today, as we race towards 2047, as we race towards 2050, where India is a signatory on the Sustainable Development Goals, all your ad hoc CSR activities are of no use. You are doing a disservice to the country. And therefore, please take
this very seriously. That is why our Honorable PM has set a vision. And as a PSU, you're expected to help supplement government efforts. We are all trying in our own way. And what is VG? Absolutely. For me, PSUs are the Vishwa Guru. When we talk of ESG, in my committee that I chair on the sustainability standards, I was very clear in my committee that I will reference the Global Reporting Initiative. I will reference the ESRS, European Sustainability Reporting Standards. I will look at everything. But eventually, I will do what India wants. I will do what minds like you from India think India needs. So we are this year about to unravel India's ESG standards. Many of you may not know, the Bureau of Indian Standards has developed a uniquely CSR standard for India called IS 26001. We have it all with us. I will end with just, for me, I don't believe in CSR. And when I say I don't believe in CSR, I mean this way CSR is done elsewhere, not here, because this has been such an excellent, you have recognized mental health, it has stayed on with me. Maybe, we also need to talk about thematic and geographic areas, and my compliments to RVNL, Coal India, and all the other winners who are doing work in aspirational districts. I don't know if any of you know about Narayanpur in Chhattisgarh. And for me, this is a case study from India. When we talk of partnerships, when we talk of globalization, I'm very clear, and I think the government of India is very clear. You listen to us, we listen to you. You lecture us, we reject you. Okay? I think people like you are doing excellent work on the field. But today, people like Vivek ji are filling a very, very critical gap. And I invite more media persons. I invite more researchers, academics, and that is why I have voluntarily given my time and energy to his initiative, to his vision. Please let us take these success stories to the people. We are not a perfect nation, but we are absolutely on the right path. If there is good happening from this country, let's celebrate. And please, therefore, be a part of such events. Please support Vivek ji. Please support whoever else is doing such initiatives. And I'll end with, it's a matter of great pride that today India is the first country to have not only successfully had a legislation which has completed a decade. If you remember, 1st April 2014 was when the CSR rules were framed, and 1st April 2024 was when we completed a decade. My humble request to all of you is, let us forget about CSR as we look at the next 10 years. We have two important milestones, actually three, in front of us that the Honorable PM has outlined for us. 2030, the clock is ticking. We have only 5 years. Many of you will know the SDGs are our target. India's national prestige is dependent upon our SDG achievements. The PSUs are the only hope. Private sector, of course, is doing its bit. But the PSUs have taken a leadership position, and today the country expects PSUs to help the country achieve the SDGs by 2030. Second, 2047. All of you know that your ministries have all been given a Viksit Bharat focus. All that you have to do is not to look at CSR from a compliance perspective. The government of India doesn't want money from PSUs for their CSR. It requires innovation. I think somebody spoke about it. It requires purpose. It requires nation building. We are in the second phase of nation building. And if for me and for my daughter, there is only one hope.
for a better world, it is going to be India as the Vishwaguru. My heartiest compliments to all of you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you so much, Professor Rohan, for a wonderful and enlightening speech. We are all overwhelmed. Let's move on and announce the last award of this category. After that, we will move to NGO category. So this last award of this category is from Energy to Excellence, Most Decorated PSU. And I would like Shri Rajiv Agarwal ji to give away this award. And the award goes to Indian Oil Corporation Limited. Indian Oil Corporation Limited. From Energy to Excellence, the most decorated PSU. Congratulations. Congratulations. जोरदार तालियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए. From Energy to Excellence, the most decorated PSU. बहुत मुबारक हो. May I call upon the stage the representative of Hindustan Petroleum Corporation Limited to say a few words. They have won Best Integrated CSR Initiative of the Year award. Please come on the dais and say a few words about your initiatives. Thanks. Thank you so much, respected dignitaries, guests. Our ED, CSR and PRCC has already conveyed in detail that our CSR initiatives range from different kind of activities, starting from health, education, community development, environment, and so on. So, being a PSU, our friends from IOCL, BPCL, and other companies agree that we are a nationwide company, and that's why we have to take initiatives from a very perspective of people who are in the remotest part of the country. So our activities like Dil Without Bill, Nanni Kali, and many more activities are dedicated efforts in education, healthcare, community development, environment protection. Like sir has said, that 5 lakh trees we have planted in only 1 year. And the story is very, very long. It starts from maybe 2 decades, 3 decades ago. So we are proud of what we have done and we look forward to continuing the same. Thank you. Thank you, sir. Next, may I invite someone from Shipping Corporation of India? They've got Best Women Empowerment Initiative of the Year. Shipping Corporation of India. Respected Munch and my colleague, thank you very much for giving us the Best Women Award, Empowerment Initiative of the Year Award to the Shipping Corporation of India. Basically, the Shipping Corporation of India is India's the largest shipping company, and under the CSR program, we have distributed the sewing machines and the ironing sets of the underprivileged women in the Harbour North 24 become the self-sufficient and the generate long-term livelihood in the direction of the Ministry of the Shipping. Thank you, my very much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. May I call on the stage representative of Indraprastha Gas Limited, Best Use of Solar Energy Initiative of the Year Award. Indraprastha Gas Limited. Please say a few words. Thanks.
respected dignitaries in the dais, and my colleagues. So for IGL, so last to last year, I took it the CSR from last year. So previously we have only done 30 projects. Last year we tried to increase the project. Totally 60 projects we have done last year, right from skill development, women empowerment, and various areas we are covering. And this year, like tree plantation is one main thing we are planning to do it. Basically, this last year we have done a few projects in solar. There is lighting the rural areas. So we feel very proud in doing these activities. Like even the villagers, we have met them, and they are really happy regarding these projects. Thank you. Thank you so much, sir, and congratulations. Empowering the Girl Child Initiative of the Year. This award went to NTPC Limited. May I please call the representative of NTPC and say a few words? Thank you for the opportunity. Respected um, honorable people on the dais, and all those who are sitting here in the audience. Well, before I say something about the Girl Empowerment Child program for which NTPC has won the award, I mean, initially there was some reference about PSUs being laggard and inefficient and all that. I mean, no offense meant probably. But then I think I should it's my duty to put things in perspective. Like, NTPC, of course, maybe many of you would be knowing, we are 1/6 of the installed capacity, power capacity in the country. It's about more than 4 lakh megawatts, and 1/6 is our share. But we generate 25% of the power of the country. And we have been creating value for its important stakeholder, the government of India, continuously giving dividend and creating value for more than 25 years now, and also value for its shareholders. And NTPC has not only won awards in CSR or thing, we have been leading in various fields of people development, efficiency in our projects, project implementation, and so on and so forth, and including international awards. And recently, we have been getting awards on the best employer category and all that. And that is even after competing with the private companies, so-called private companies. So that is just to give a background. Regarding this particular award, I mean, Girl Empowerment Program is something called, is called Balika Sashaktikaran Mission. NTPC is, is situated in very remote locations near the sources of coal, and in and around the townships which are there close to our projects. There are very big communities who are maybe not so well off economically, socially, and all that. So the girls who are studying in the government schools, they are taken in under our wings, and then in our town, in our premises, there's a 1 month fully residential program where we give a full opportunity for them for not only their improving their academics but their social capabilities, skills, their art and cultural skills, and all that. And that entire program, from the beginning, it's about 6 years now since we started. And over a period of time, we have done benefited about more than 12,500 girls. And this is for this particular initiative, it has been done. And those girls, about 10 to 12% of those girls who do well, their entire education from say 7th standard till the 12th standard is borne by our own above NTPC, and their further opportunities are also given for good initiative for good girls who have done well to pursue their higher education also. So that is the in short about the whole program. So thank you very much for the opportunity. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Next, we would like to know more about best CSR in aspirational district.
and the award was given to RVNL, Rail Vikas Nigam Limited. मैं गुजारिश करूंगा कि रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि जी यहाँ आए और अपने इस इनिशिएटिव के बारे में दर्शकों को बताएं। Thank you, sir. Good evening to all the dignitaries in the dais of the dais. मैं हिंदी बोलूँगा। मैं आरवीएनएल के सीएसआर कमेटी कोऑर्डिनेटर हूँ और जब से ये सीएसआर शुरू हुआ है 2011 से, तब से मैं सीएसआर कर रहा हूँ। स्पेशली हम लोग को एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में इसलिए मिला कि एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट जो है ना, हमने सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है नारायणपुर, जहाँ की कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी काम नहीं करती है, कोई गवर्नमेंट मशीनरी काम करती है, ओनली रामकृष्ण मॉडर्न मिशन काम करता है। वहाँ पर हमने एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में काम किया है नारायणपुर में। और ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाया आपको 2017 में, वैरेज हमने नारायणपुर में 2012 से वहाँ पर कर रहे हैं। तो नारायणपुर छत्तीसगढ़ का हुआ एक, उसके बाद उड़ीसा में रायगढ़ बिल्कुल रिमोट एरिया है, मलकानगिरी है, वहाँ पर भी हमने कर रहे हैं। हरिद्वार में कर रहे हैं, हरिद्वार एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपको झारखंड में रांची और पश्चिमी सिंहभूम, ये सभी एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्टों में ना हमने सीएसआर का मैक्सिमम सीएसआर एक्टिविटीज हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर, दैट इज आवर फर्स्ट एरिया, आरबीएनएल का सीएसआर का फर्स्ट एरिया है, जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। हमको एक और अच्छा रिमाइंड हो रहा है, अभी 2020 में 26 फरवरी 2020 को, उस समय हमारे डॉक्टर अमिताभ कांत जो है ना सीईओ थे नीति आयोग के, तो उन्होंने 55 पीएसयू को इनवाइट किया था नीति आयोग में प्रेजेंटेशन देने के लिए एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो उसमें जो है ना, जब वो आए ठीक 12 बजे आए, बोला भाई शुरू करो। पहले जो शुरू किया उसने 20 मिनट तो स्लाइड दिखाया, उसके बाद 4-5 मिनट बताया उन्होंने। तो बोलता है अगर आप 25 मिनट एक लोगे, 55 पीएसयू है, हम रात के 8 बजे गए थे, 1 घंटे के लिए आया हूँ, आप लोग डिस्कशन करो। डिस्कशन में से ज्यादातर करीब 20-25 जो है सीएमडी एमडी थे और बाकी से डायरेक्टर थे, आरबीएनएल से मैं था। मैं बोला ये बहुत ही अच्छा है, और हर एक ने मैक्सिमम ज्यादातर जो है ना क्या किया, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को ब्लेम करना शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की वजह से हमारा डिले होता है, किसी बोलता है हमारा पेमेंट नहीं होता है, ये नहीं होता है। मैं बोले बहुत अच्छा मौका है। मैं बोला सर इस तरह से हमने रामकृष्ण मॉडर्न मिशन से एसोसिएशन से मैंने कर रहा हूँ सीएसआर, और आज तक हमको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। और हमने सीएसआर का 100% 100, अगर हमने अगर 100 रुपये दे 110 रुपये का हमको रिटर्न मिला है सीएसआर में, रामकृष्ण मॉडर्न मिशन को देने की वजह से, इसकी वजह से। और हमने 100% जो है ना वो प्रोजेक्ट का हर एक चीज का इम्प्लीमेंट किया है। और उसमें सबसे बड़ी चीज मैंने और एक चीज बताया था, सीएसआर कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 में शुरू किया। ये कॉन्सेप्ट स्वामी विवेकानंद ने हमारे पुराने एंशियंट कल्चर को लेकर 1893 में, जब स्वामी विवेकानंद और जमशेदजी टाटा दोनों ओक्लाहोमा से वैंकूवर जा रहे थे, जमशेदजी टाटा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए जा रहे थे, स्वामी विवेकानंद किस तरह से भारत का प्रगति हो, किस तरह भारत का उत्थान हो, उसके लिए जा रहे थे। आपस में बातचीत हुआ दोनों का शिप में, बोला जमशेदजी यू आर सीइंग द पीपल ऑफ इंडिया डाइंग जस्ट लाइक ए टीचर, व्हेन यू गिव देम लिटिल बिट हेल्प। तो स्वामी जब जमशेदजी बोला अरे ये तो हम लोग तो बड़े इतने इंडस्ट्रियलिस्ट है, और ये तो बिल्कुल एक सन्यासी है, लेकिन इसको इंडिया के बारे, इसको गरीबों के लिए इतना ज्यादा चिंतित क्यों है। उससे इंस्पायर होकर जमशेद जी ने क्या किया, जब अमेरिका से आया, आने के बाद आईआईएससी का जो है ना उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और आईआईएससी को बनाने के लिए तीन आदमी का बहुत बड़ा योगदान है। एग्जीक्यूट किया जमशेद जी टाटा जी ने, लैंड दिया महाराजा मैसूर ने, और उसको इम्प्लीमेंटेशन, ओके सर, उनको जो है ना उनको जो है ना आपका गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो असर लाया था वो शिष्टा निवेदिता थी, जिसकी वजह से किया था। तो इसके वजह से ये किया था, इसकी वजह से हमने ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा था। और स्वामी विवेकानंद वाले, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बोला, इसकी वजह से वो ये किया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच सर।
May I now request Senior Advocate Mr. Ramesh Gupta ji to come on the stage and have a seat here, sir, please. Now let's move on to the next category of awards. This is special recognition, NGO category. May I request Mr. Alok Verma ji to give away these awards? Best NGO of the Year. Best NGO of the Year award. And the award goes to Rotary Foundation, India. Rotary Foundation, India. Best NGO of the Year award goes to Rotary Foundation, India. If the representatives are here, they're not here. Can I request you to please come? Yeah. Please come and take the award on their behalf. Someone has to take the award. Congratulations to Rotary Foundation India. Next award is Most Impactful NGO of the Year. Alok ji, please, if you could do the honor of awarding this category also. Most Impactful NGO of the Year. And the award goes to Helpage India Foundation. Helpage India Foundation. Give them a big hand. Helpage India Foundation. Congratulations. For next awards, may I request Shri Rajiv Agarwal ji to give away these awards. Most Inspiring NGO of the Year. Most Inspiring NGO of the Year. Smile Foundation India. Smile Foundation India. Congratulations. Most Inspiring NGO of the Year. Smile Foundation India. Many congratulations. Next is Most Trusted NGO of the Year. Most Trusted NGO of the Year. And the award goes to Dulari Devi Foundation. Dulari Devi Foundation. Congratulations to Dulari Devi Foundation. Representatives of Dulari Devi Foundation. Congratulations to Dulari Devi Foundation. Next award is Most Meaningful NGO of the Year award. May I request Ramesh Gupta sir to give away this award? And the award goes to Navratan Foundations. Navratan Foundations. Most Meaningful NGO of the Year award. Navratan Foundations. Give them a big hand. Congratulations to Navratan Foundations. May I request Ma'am Preeti Srivastava to say a few words about their NGO, Navratan Foundations. Namaskar. It is such a pleasure to speak when Vivek ji, Alok ji, and other people and so many dignitaries here. As a trustee of Navratan Foundation, I'll just take a minute. कि हमारा NGO, I see it as a way of life. We are Noida based
और हमारा एक ही लक्ष्य था जब 24 साल पहले शुरू किया कि हम जितने भी स्लम्स में और अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ें। आज स्किल डेवलपमेंट के अंडर हमारे 35 वोकेशनल सेंटर्स हैं जहां हम स्टिचिंग और टेलरिंग सिखा के उनको मुख्य धारा से जोड़ते हैं। एडल्ट एजुकेशन के थ्रू उनको आगे लाते हैं। स्लम स्कूल उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स ज़्यादातर माइग्रेटेड वर्कर्स हैं, वो सारे दिन बाहर जाते हैं। तो उस स्लम के बाहर ही हमने एक स्कूल खोला ताकि बच्चों को इधर-उधर ना भटके और उनको मेन एजुकेशन सिस्टम से जोड़े, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास ये डेटा भी नहीं है और डेफिनेशन भी नहीं है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन क्या है। उसके बाद एक बहुत बड़ी कमी थी जो गवर्नमेंट में भी बहुत जो स्कूल्स जो कि एक-एक कमरे में है, उनको सर्दियों में यूनिफ़ॉर्म की। तो एक हमारा शीत कवच प्रोग्राम चल रहा है बहुत सालों से, तो उनको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा। और इसमें पेट्रोनेट को मैं स्पेशली थैंक यू बोलूँगी कि पेट्रोनेट ने हमारे पार्टनर्स बने, थैंक यू। दूसरा मेरा फेवरेट है कंप्यूटर सेंटर्स हमने खोले गवर्नमेंट स्कूल्स में और ऐसी जगह में जहाँ सुबह बच्चे दोपहर को सीख सकते हैं और शाम को कम्युनिटी से कोई भी आके सीख सकता है। इसमें भी पेट्रोनेट हमारे संग जुड़ा। बहुत सारी कैटेगरीज और काम करते हैं लेकिन वक्त का तकाजा है, इसलिए एक चीज मेंटल हेल्थ की बहुत बात हुई है। तो हमारे 2 इनिशिएटिव हैं। एक हमारे फाउंडर प्रेज़िडेंट अशोक जी यहाँ बैठे हैं, उनकी सोच थी कि सोशल आइसोलेशन को कैसे दूर करें। स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके बच्चे बाहर या अकेले हैं या छोटी फैमिली, तो हमने एक तरीका निकाला आर्ट एंड कल्चर के थ्रू उनको लाएँ। तो अगर आप नवरत्न को फ़ॉलो करेंगे, वेबसाइट पे भी है, तो हम हर महीने म्यूजिक के प्रोग्राम करते हैं ताकि लोग इकट्ठे हों। लेकिन इसी के थ्रू एक बहुत बड़ा काम नवरत्न कर रहा है कि जो प्रतिभाएँ हैं, चाहे आप 80 साल के हो, चाहे 8 साल के हो, आपको हम स्टेज देंगे। आप आके गाना गाइए, अपनी प्रतिभा दिखाइए और इसको हमने एक पूरा एक फॉर्मेट दे दिया है एक कॉम्पिटिशन का। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आज बॉलीवुड और टेलीविज़न और बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे गा रहे हैं। लास्टली हम अभी अगले महीने एक क्योंकि हमारा एक मेंटल हेल्थ थिंक टैंक शुरू किया है और जो आपने बात करी थी कि गवर्नमेंट की सोच से हम लोग प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहते हैं। प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ में कि हमारा जो इमोशनल वेलनेस है उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। हम काउंसलिंग नहीं करेंगे, हम ये आपको सिखाएँगे कि आपके अंदर आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी इमोशनल वीकनेस क्या है और आपका इमोशनल ट्रिगर पॉइंट्स कौन से हैं। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और आपको अपने बारे में जानकारी हो, आपको मेंटल हेल्थ की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बारी बहुत-बहुत धन्यवाद विवेक जी एंड आई एम रियली प्राउड along with Ashok to receive the award. Thank you. और जो आपने जो हमें अवार्ड मिला है ना मीनिंगफुल, आई थिंक आई वी आर रियली रियली थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. There are a couple of more speakers left, and I would like them to come and speak briefly about their projects. HLL Life Care Limited, Best Women Healthcare Initiative of the Year. So, if the representatives are here, they can come and tell us about their initiative. I guess they're not here. So, uh, yeah, they have left. Barmer Lorry and Company Limited, Best Child Healthcare Initiative of the Year. If the representatives are here, I would like them to come and say a few words briefly, because अब भूख भी लग रही है लोगों को और प्यास भी लग रही है. Good evening, people on the dais and my PSU friends and the Catalyst for Change NGOs. Without you, we are helpless because we go through you. And we have been chosen as best child health care
only because we are a very small company, and we take projects. Baman Lorry is known as a company which is a diversified company, but it is known for ticketing. But I always say that our projects are a ticket to wellness, ticket to quality, a ticket to development, a ticket to change. We change the society, we take up projects, good one. And in this child healthcare, what we have taken is the foremost is that if you take into account IMR, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल. These are important. So when you harness that and take up health projects for the children, there will be always better off. The IMR will get down, reduced. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Next up, I would like to call Preeti Pandey of Dulari Devi Foundation to say a few words. Most trusted NGO of the year, Preeti Pandey. जय हिंद, मेरा प्रणाम सभी को। स्टेज पे बैठे हुए सारे डिग्निटरीज़ को मेरा प्रणाम, जय हिंद। और मुझे पता है सब ऑफ़िस के बाद आए हैं, थके हैं, भूख लगी है, तो शॉर्ट में 2 मिनट में अपनी बात कहूँगी। 11 साल पहले मैं एमबीए हूँ, ऑस्ट्रेलियन कंपनी में जॉब करती थी। शाम को एक झक सवार हुआ कि अब नौकरी नहीं करनी, ये 9 से 5 की नौकरी मेरे लिए नहीं बनी है। तो बिना घर में बताए 11 साल पहले, क्योंकि बनारस से आई थी, अब तो बनारस छोटा शहर नहीं है, बनारस कभी भी छोटा शहर नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद हैं, तो बनारस जो है वो विश्व में पटल पे है। और 11 साल पहले मुझे ऐसा लगा कि हम एमबीए करके आए, नौकरी कर रहे थे यहाँ बहुत अच्छी कंपनी में और एमएनसी में बहुत अच्छे-अच्छे पैकेज पे भी थी। लेकिन घरवालों को लगता है ना कि नौकरी कर रही है, लड़की है, अच्छे पैकेज पे अचानक से छोड़ के आप अचानक से माँ-बाप को एक दिन बोल देंगे मैंने नौकरी छोड़ दी। तो माँ-बाप को लगता है अरे अब क्या करेगी? तो ये मतलब इसकी सिक्योरिटी क्या है, सेफ्टी क्या है? तो मैंने पापा को सिर्फ़ एक बात कही थी कि मैं कभी भी आपके सर पे बोझ नहीं बनूँगी। दिल्ली जा रही हूँ नौकरी करने के लिए, कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपका सर झुके और ये ज़रूर ख़्याल रखूँगी कि आपने जो पढ़ाया है, लिखाया है, मैंने एमबीए किया है, उसको आगे लेके जाऊँगी। एमबीए के बाद जब जो नौकरी करते थे, जो तनख्वाह आती थी, उसका 10% जो है वो हमेशा चैरिटी नहीं कहूँगी, चैरिटी शब्द बहुत अजीब लगता है सुनने में मुझे। जहाँ पे भी मदद कर सकते थे, उनको करते थे और नौकरी के दौरान मेरे जो बॉसेस थे और मेरे जो कलीग्स थे, मेरे जो टीम मेंबर्स थे, उनके साथ ही मैंने ये षड्यंत्र रचा कि मैं तो नौकरी छोड़ूँगी, तुम सारे नौकरी करते रहना, जो तुम्हारी तनख्वाह आएगी उससे 1% पैसा देंगे, जिससे हम स्लम्स में काम करेंगे। तो पिछले 11 वर्षों से साउथ दिल्ली में और यूपी में हम लोग स्लम्स के बच्चों और गाँव में काम कर रहे हैं। अलग-अलग इनिशिएटिव पे काम करते हैं, जिसमें मेन हमारा है एजुकेशन। जो बच्चे अभी मैम ने स्लम स्कूल की बात करी, हम लोग झुग्गी स्कूल चलाते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल उन तक कैसे पहुँचे? क्योंकि कोई बच्चा कूड़ा बीनने जा रहा है इंडिया गेट पे, कोई रैग पिकर है, कुछ और काम कर रहा है। अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं घर की, नहीं पढ़ सकता। खाली पेट उसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। तो कैसे हम वो करें कि ठीक है तुम कूड़ा बीन के 2 बजे भी आ जाओगे अगर तो खुसरो पार्क, निज़ामुद्दीन, पंतनगर इन जगहों पे कैसे हमारा एक टीचर जाए और आपको पढ़ाए। तो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, समय कम है लेकिन सबसे बड़ा इनिशिएटिव हमारा यहीं पे है और 11 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भैया हैं वैसे तो विवेक भाई हैं मेरे बड़े, लेकिन इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म उन नए एनजीओज़ को भी मिलना चाहिए जो अभी नए हैं, काम कर रहे हैं और जो पुराने इतने बड़े एनजीओज़ बैठे हैं, आपका आशीर्वाद रहेगा, आपकी गाइडेंस रहेगा तो हम लोग कुछ ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे और पीएसयूज़ को थैंक यू सो मच कि आप एनजीओज़ की मदद करते हैं जिसकी वजह से हम काम करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी टीम यहाँ बैठी है जिसने 11 साल में बिना ₹1 लिए वॉलंटियर किया है और आज तक काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू मैम। और तो क्या शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। बिल्कुल, और ये चीज हम यहाँ महसूस कर रहे हैं आज। क्या ही अच्छा हो कि इस शाम का अंजाम जो है, आगाज तो बहुत अच्छा हुआ, अंजाम भी अच्छा हो और क्या ही अच्छा हो कि मुस्कुराहट से इसको हम इख्तिताम तक पहुंचाएं, इसके खात्मे को हम पहुंचे मुस्कुराहट से। और जब मुस्कुराहट की बात होती है तो स्माइल फाउंडेशन इंडिया यहाँ मौजूद है और अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आकर के हमें कुछ बता सकें कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और किस तरह से मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जो कारवां बनता गया कहानी स्माइल की भी कुछ ऐसी ही है।
22 साल पुरानी संस्था है और ज़्यादातर लोग कंपनी सेक्रेटरीज, लॉयर्स, ऐसे लोग जिन्होंने अपने बचपन में अपने माँ-बाप को अपना पेट काट के उन्हें पढ़ाते हुए दिखाया और वहाँ से सीख ली कि जब कभी नौकरी मिलेगी तो थोड़ा काम करना चालू करेंगे। और शुरुआत यहाँ से हुई कि पढ़ाई बच्चे को अगर आप पढ़ा देंगे तो अपनी सारी सहूलियतें एक जगह पे एकत्रित कर सकेगा बच्चा। और शुरुआत पढ़ाई से करनी चालू करी, लेकिन धीरे-धीरे समझ में आया, जैसा किसी ने थोड़ी देर पहले बोला कि हमें हमारे पास हमारे देश में अपने को ठीक करने के, अपने को एक एक मुकाम पे ले जाने की सारी जितनी भी नॉलेज है वो हमारे पास मुहैया है, उसको सामने लेके जाना। सो पढ़ाई से चालू करके ये समझ में आया कि भूखे पेट बच्चा समझता नहीं, तो वहाँ से हेल्थ में पहुँचे और वहाँ से आज की डेट में स्किलिंग करते-करते देश के 26 राज्यों में कुछ 104 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, 86 कॉर्पोरेट्स के साथ काम हो रहा है और सब आपका आशीर्वाद है। साथ में रहे सबका आशीर्वाद, ऐसे ही ज्ञान मिलता रहे सबका और जितना आगे हम सरकारी स्कीम्स को ले जा सकें, हमारा काम यही है कि जो भी सरकारी स्कीमें हैं, बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, लास्ट माइल तक पहुँचने के लिए बनी हुई हैं, लेकिन बहुत एफिशिएंट और डेडिकेटेड लोग चाहिए जो उसको लास्ट माइल पे ले जा सकें। वो काम हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसमें आपका साथ रहे विवेक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए और आप सबका यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया, स्माइल फाउंडेशन। अ, चलिए इस शाम को अंजाम तक पहुँचाते हैं और हम अब आज के शाम के होस्ट श्री विवेक अवस्थी जी को यहाँ बुलाते हैं और उनसे सुनते हैं कुछ कहानियाँ, यहाँ तक पहुँचने का संघर्ष और मैं चाहूँगा कि वो आप सब लोगों का शुक्रिया अदा भी करें। वोट ऑफ थैंक्स। विवेक अवस्थी जी। थैंक यू दारिन भाई। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए, अपना कीमती वक्त निकाल के और आपने इस शाम को एक अच्छी शाम बनाया। मैं आपका आभारी हूँ। indianpsu.com की जर्नी 5 साल पहले शुरू हुई थी और इसको हम लोग आपस में जब मजाक करते हैं, बात करते हैं, मैं और विनीत जी, तो कहते हैं कोरोना बेबी, तो कोरोना काल की पैदाइश है। 5 साल हुए तो हमको लगा कि एक कहीं पे गैप है, जो कि मैं प्रोफेसर सन्ना से भी डिस्कस कर रहा था। गैप ये है कि सीएसआर में काम बहुत होता है, लेकिन रिपोर्ट नहीं होता है। पता नहीं क्यों। या तो पीएसयूज अपनी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते हैं या उसमें आज का जो मॉडर्न मीडिया है, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। मुझे नहीं मालूम है उसका कारण क्या है। आप की तरफ से भी कुछ उदासीनता हो सकती है अपने प्रोजेक्ट्स को पब्लिसाइज करने में, आगे बढ़ाने में, और शायद ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है मीडिया के लिए, बिकने वाला माल नहीं है। मतलब मैं एक बड़े पुराने उस पे जाता हूँ, एक कलाकार हैं, अदाकारा हैं, पता नहीं कितनों को याद होगा, नाम उनका नहीं होगा, उनका राखी सावंत। उन्होंने कभी कहा था दिखता है वो बिकता है, लेकिन हमारा सीएसआर ना दिखता है ना बिकता है। अजब बात है। पूरे देश में काम हो रहा है, हर सेक्टर में काम हो रहा है, पीएसयूज इतना कुछ कर रहे हैं, एनजीओस इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में मीडिया बात करने को तैयार नहीं है। इस चीज को देखते हुए हम लोगों ने अपने पिछले अवार्ड फंक्शन में इस बात की घोषणा की कि हम इंडियन पीएसयू CSR.com लॉन्च करेंगे। हमने सक्सेसफुली किया। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। वो छोटी टीम है हमारी और हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। और हमारा जितने भी लोग, आप लोग यहाँ पीएसयू से जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा केवल एक निवेदन है, आप लोग जो भी करते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, 100 पेड़ लगाइए, 200 लगाइए, 500 लगाइए, लेकिन पब्लिसाइज करिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आप लोग इतना एफर्ट करते हैं, इतना काम करते हैं, किसी को उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता। एंड सेम गोज टू एनजीओस। आप लोग क्या क्या नहीं कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो, किस जतन से आप लोग पैसा लेके आते हैं। जैसे मेरी छोटी बहन ने भी बोला कि वो अपनी नौकरी छोड़ के आ गई। भाई साहब ने बताया कि किस तरह वो लोग क्या कर रहे हैं। भाई साहब ने, मैडम ने बताया किस तरह लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, रिकग्निशन कहाँ है। रिकग्निशन से मेरा मतलब नहीं है कि आपको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिले।
हाँ? या आपको हाथी पे बैठा के घुमाया जाए? हाँ? मेरा मतलब कहने का सिर्फ ये है कि कम से कम लोगों को मालूम तो हो कि पीएसयूज क्या कर रहे हैं, एनजीओज क्या कर रहे हैं। इसलिए हमने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग जो भी काम करते हैं, छोटा करें या बड़ा करें, वो कम से कम हमें बताएं, ताकि हम उसको कोशिश करके आगे तक लेके जाएं, लोगों को इन्फॉर्म करें कि फला पीएसयू ने ये किया, फला एनजीओ ने ये किया, इस फील्ड में ये, इस फील्ड में ये, और उस चीज को आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों को मालूम चले कि आप लोग कर क्या रहे हैं। किसी को मालूम ही नहीं है और मीडिया को उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ। आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो भी करते हैं, प्लीज फील फ्री टू contact indianpsucsr.com for all your activities. We will be pleased, more than pleased, to publish it along with photos and videos if possible. Thank you. शुक्रिया विवेक अवस्थी जी। तो इसी के साथ हम इस शाम को अंजाम देते हैं। लेकिन हाथी नहीं आएगा, कुछ और आएगा। क्या मतलब है आपका? पिछली बार वाला हाथी नहीं आएगा, कुछ और आएगा। मतलब आप एक बार फिर अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं और ज्यादा? दरअसल ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ कहानी सुनाऊं और शानदार जर्नलिस्ट, बहुत शानदार इंसान उन्होंने कहा था। दास्तान गोई के बहुत बड़े महारथी, दास्तान गोई जो दुनिया भूल चुकी थी और इन्होंने उसको से जीवित किया है। पूरे देश में जाके शोज करते हैं और उस कला को जिंदा रखने में इन्होंने बहुत बड़ा किरदार किया। तो आज हाथी जिए या मरे, तो क्या जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। दास्तान गोई उस फन का नाम है जिसमें लंबे किस्से कहानियाँ सुनाए जाते हैं। दास्तान यानी कहानी और गोई यानी कहने का तरीका। और ये इंडिया में 1928 के आसपास ये मर चुका था ये आर्ट, उसको हम लोगों ने रिवाइव किया है। तो ये दास्तान गोई बड़ी लंबी कहानियाँ होती हैं। जब इसको लिखा जाना शुरू किया गया लखनऊ में तो ये 48,000 पेज में समाया। एक वॉल्यूम 1000 पेज का, 48 वॉल्यूम्स। तो यू कैन इमेजिन के हाउ बिग, हाउ एग्जैजरेटेड इट इज। इट इज द बिगेस्ट स्टोरी इन द वर्ल्ड। ये तो ट्रेडिशनल दास्तान गोई है। दास्तान अमीर हमजा और तिलिस्म होशरुबा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा किस्सा अलिफ लैला, हातिम ताई, अरेबियन नाइट्स, ये सब आप लोग जानते हैं। कम्स फ्रॉम द सेम ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन। महाभारत और रामायण भी जो है हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो भी ओरल ट्रेडिशन से ही आते हैं। तो अब विवेक जी कहते हैं कि आप दास्तान सुना दीजिए। अब बताइए कि इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है और इतना लंबा चौड़ा इसका ये वॉल्यूम्स हैं, अब छोटे से समय में दास्तान कैसे सुनाई जा सकती है? चलिए, पिछली बार मैंने एक लतीफा सुनाया था, इस बार भी दास्तानी फॉर्म में एक लतीफा सुनाता हूं आपको। क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में मैंने विवेक जी से पिछली बार बताया था। इस बार कुछ दूसरा नया कोशिश करता हूं। इसमें क्या होता है कि दास्तान गो जो होता है, दास्तान गोई का एक आर्ट ये भी है कि वो एक्सटेम्पोर बहुत कुछ करता है और देखिए किस तरह से फिर बात बनती है, बनती चली जाती है। लेट्स सी। तो एक राजा था, राजा को किस्से कहानी कथा वगैरह सुनने का बड़ा शौक था और वो राम कथा बड़े चाव से सुनता था। तो उसने एक बार मुनादी करवाई कि मुझे जो राम कथा सबसे अधिक समय तक सुनाएगा, मैं उसे बहुत जमीन जायदाद इनाम में दूंगा। तो मुनादी करवा दी गई और उस महाराजा ने इंतजार किया कि जो सबसे लंबे समय तक मुझे राम कथा सुनाए उसको मैं इनाम दूं। तो बहुत सारे लोग राम कथा उसे सुनाने आए, श्रावस्ती नगरी से, उज्जैनी नगरी से, काशी नगरी से, मगध से, अंग प्रदेश से, यहां से वहां से, सारे एक से एक कथावाचक, एक से एक किस्सा गो, एक से एक दास्तान गो बादशाह के सामने आते, बैठते, राम कथा सुनाते। बादशाह कहता कि ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो राम कथा समाप्त हो गई, तुम जाओ, मेरा जी नहीं भरा। लेकिन साहब भाई अब लोगों का तांता लगा रहा, लोग आते रहे, राम कथा सुनाते रहे। राजा का जी न भरता, वो उन्हें रुखसत कर देता। लेकिन साहब उसका जी नहीं भर रहा था तो वजीर ने कहा कि एक बार फिर से मुनादी करवाओ कि एक कोई ऐसी राम कथा सुनाने वाला आए कि जो राजा का दिल जब तक न भरे तब तक सुनाता रहे। तो साहब कहीं कोई मिल ही नहीं रहा था। इत्तफाक ऐसा था हाजरीन कि उस नगर से विवेक अवस्थी गुजर रहे थे।
विवेक अवस्थी ने देखा कि कुछ मंत्रणा चल रही है, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग सिर जोड़े कुछ बात कर रहे हैं कि मामला क्या है। मैंने कहा कि अरे भाई विवेक अवस्थी साहब, यहाँ पे कुछ दूसरी बात है, आपसे ना हो पाएगा, जाइए। कहने लगे क्या बात कर रहे हो, कौन सी ऐसी समस्या है जिसका हल मेरे पास नहीं है? इंडियन PSU.com चलाता हूं, इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता हूं एक क्षण में, तुम क्या बात कर रहे हो कि मेरे से कोई ये बात समस्या का हल नहीं होगा? मैंने कहा अच्छा चलिए, बात ये है कि यहाँ के राजा हैं, उन्हें राम कथा सुनने का बड़ा शौक है, और उनका ये कहना है, शर्त उनकी ये है कि जब तक उनका जी न भर जाए तब तक वो राम कथा सुनाता रहे, जब तक राजा ये न कह दे कि बस अब बहुत हो गया है जी, जब तक ये न कहे कि बस हो गया है, तब तक वो राम कथा सुनाता रहे। तो वो राजा जो है उन्हें जमीन जायदाद और इनाम और इकराम देगा, वरना उसे वो भगा देगा। तो विवेक अवस्थी ने कहा किधर है राजा का दरबार, मुझे भी ले चलो। तो साहब कुछ लोग ले गए राजा के दरबार में। राजा बैठा था, बादशाह सलामत बैठे थे। राजा के सामने विवेक अवस्थी हाजिर हुए, कहने लगे महाराज मैं एक ऐसी कथा लाया हूं कि जो आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन मैं न थकूंगा। कहने लगे भाई सुनाओ। कहने लगे नहीं नहीं, एक शर्त है, पहले कुछ CSR का फंड वंड रिलीज कीजिए, तब तो मजा आए। कहने लगे क्या बात कर रहे हो, CSR मेरे राज में? कहले हाँ, 1899 भूखे लोगों को खाना खिलाइए, 1188 पेड़ लगवाइए, और कुछ और इस तरह के कुछ आप करवाइए काम, तब तो मजा आए। और हमारे कुछ PSU के भी कुछ लोग हैं, उनको भी इकट्ठा करवाइए और उनको कुछ फंड वंड दीजिए महाराज, तब मैं कथा सुनाऊं आपको। राजा ने सारी शर्तें मान ली, फंड रिलीज किया, पेड़ लगवाए, गरीबों को खाना खिलवाया, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करवाया, महिलाओं को एम्पावरमेंट करने का वहां इंतजाम करवाया, और तमाम तरह की CSR एक्टिविटीज जब विवेक अवस्थी जी ने बादशाह से करवा ली, तब कथा शुरू की कि सुनिए महाराज, अयोध्या नगरी में एक किसान रहता था, बड़ी बम्पर फसल हुई, और उस फसल को उसने काटा और कनस्तर में डाल करके बैलगाड़ी पे लादा, और लाद करके चला शहर को बेचने के लिए। कि रास्ते में महाराज एक पीपल का पेड़ था, पास में तालाब था, और पीपल के पेड़ को देख के उसके छाए में उसने बैलगाड़ी रोकी। उस पे सारा कनस्तर लगा हुआ था, लदा हुआ था, कि उस पीपल के पेड़ के नीचे उसने कहा कि विश्राम कर लूं। विश्राम करने के लिए लेटा ही था कि उसे नींद आ गई। अब जब वो सो गया तो पीपल के पेड़ से एक चिड़िया उड़ी, कनस्तर में से एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई और उड़ गई। फिर महाराज दूसरी चिड़िया उड़ी, कनस्तर में से एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई और उड़ गई। महाराज तीसरी चिड़िया उड़ी, कनस्तर में से दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई और उड़ गई। महाराज पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं चिड़िया उड़ी, कनस्तर में से दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई और उड़ गई। तो राजा ने कहा भाई ये बताओ, तुम चिड़िया की कहानी सुना रहे हो, राम जी की कहानी सुना रहे हो, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा अरे महाराज सुनिए तो सही। उसने बोला कि क्या कितनी चिड़िया है? अरे महाराज पीपल का पेड़ है, अब उस पे कितनी चिड़िया आ रही है, कितनी चिड़िया जा रही है, मुझे क्या मालूम। तो हुजूर 8809वीं चिड़िया उड़ी, पीपे में से दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई और उड़ गई। ये बताओ कि कनस्तर में दाने कितने हैं? मतलब महाराज कनस्तर में कितने दाने हैं मैं कैसे बताऊं, कोई गिन तो सकता नहीं। हाँ अंदाजा लगा सकता हूं कि आसमान में जितने तारे हैं, कनस्तर में उतने ही दाने हैं। तो महाराज 10,08,008वीं चिड़िया उड़ी, कनस्तर में से दाना चुगा और तालाब में डुबकी लगाई और उड़ गई। राजा समझ गया कि ये मेरे साथ जो है कुछ कर रहा है, चालाकी। तो उसने फिर पूछा कि ये बताओ कि तुम राम कथा सुनाने आए थे, तो मुझे ये सब सुनाने लगे, ये माजरा क्या है? तब विवेक अवस्थी जी ने कहा कि महाराज आप मुझे ये बताइए कि पीपल का पेड़ कहाँ है? बोला अयोध्या नगरी में। ये चिड़िया कहाँ रहती हैं? अयोध्या नगरी में। वो किसान कहाँ है? अयोध्या नगरी में। वो खेत कहाँ है? अयोध्या नगरी में। वो तालाब कहाँ है? अयोध्या नगरी में। और अयोध्या के राजा कौन है महाराज? राजा राम ही तो हैं। तो राम जी की तो कथा हुई, तो 1,08,09वीं चिड़िया उड़ी, कनस्तर में से दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगी, उड़ गई। तब राजा ने कहा कि भैया माफ करो, बहुत हुआ, तुमने ऐसी कथा सुनाई और ऐसी शुरू की कि ये कभी समाप्त नहीं होगी, मेरा दिल भर गया। हरि अनंत हरि कथा अनंता। धन्यवाद। और अब खाने और पीने का इंतजाम। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन।
लंबी तो नहीं होगी ज्यादा? मैंने सुना कि आप 12 बजे तक Please come for a group photograph. Please come this side towards the stage for a group photograph. आलोक जी तो डर के थे कि 12 बजे तक कुछ ओके सर भाई आपने जी जी